हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्ते और प्रणाम। आयुष गर्ग है मेरा नाम। कोशिश करूंगा पूरी कि आज रंगीन बना दूं आपकी शाम। So, hope I'm audible and everyone can hear me. I have actually muted everyone, so any communication which needs to be taken place needs to take place through the chat box. So I hope everyone is familiar with the chat feature. And so in the beginning slide, I asked everyone to get a pair of shoes, जो मुझे पता है कि काफी लोग नहीं लेके आए हैं, because आप सबको सीखना तो है, you want to learn anything and everything in 39 minutes, but instructions तो हमें लगा कि ये क्या चीज है, ये कुछ अनसुनी चीज है, अनफेमिलियर चीज है, तो काफी लोग जो नहीं लेके आए हैं, it's okay, you can get it through the duration of this webinar. Also, there was another thing mentioned on the first slide. It was that are you spending your time or are you investing your time? So I want to say that, just a second. Right. So I want to say that what is an investment? If you invest your time, you will get the returns out of it. If you spend your time, you won't get anything out of it. So I will make sure that to deliver you something valuable, so that you consider this time you've given to me as an investment. So to begin with, I would like to say that everyone is muted and we will use the chat feature to communicate with each other. For those who are seeing this webinar through the mobile phone, your chat feature will be, if you click on participants and you click on the lower left hand side corner, you will be able to see chat feature. So for everyone, if you think that you're familiar with chat feature, to start, okay. So who all prefer online webinars or do you prefer offline webinars? तो जिसको ऑनलाइन वेबिनार पसंद है वो चैट पे सारे ऑन लिखो, और जिसको ऑफलाइन वेबिनार पसंद है वो सारे चैट पे ऑफ लिखो, so that I know that everyone is familiar with the chat feature. Everyone, I want this to be participative. It was mentioned in the rules. So जिसको ऑनलाइन पसंद है वो ऑन लिखो, जिसको ऑफलाइन पसंद है वो ऑफ लिखो. और जिसको कुछ भी नहीं पसंद वो एटलीस्ट फुल स्टॉप डाल दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको चार्ट फीचर क्लियर समझ हो गया है. एंड मेक श्योर दैट you when you write to, you say to everyone in meeting. Great. So personally, this is my first online webinar, and I to love online webinar, because if I get stuck or if I get anxious, I will just turn the laptop off and I will run away and say it was a technical glitch. So I personally like the online webinar, but I hope that's not the case. So before I begin, to achieve my promise and to deliver you the value of this webinar to you within the stipulated time, I have a small problem and you need to help me with that problem. So I'll show you the problem and depict you the problem in a certain way. The problem is that I want to put water into this bottle through this bottle. So I'll try it. I'll try again. So my mom is watching from the other room and she's just going to come and kill me for the mess I've created. But did any one of you get the problem? The problem is that I want you all to imagine that this bottle is your mind and the lid on top of it is your belief system. Belief system क्या होता है कि जो चीजें हमें बचपन से बताई गई हैं, जो चीजें हमें बचपन से समझाई गई हैं, and the things that we believe. So if I say something what you don't believe, I will pour it in and it will fall off. And you want to learn everything, you want to fill in this bottle, but you can't learn anything if the lid is on top of your mind. So in order to learn,
I want you all to open this lid of your mind. I want you all to let the things which I tell go in. जो चीजें मैं बताऊं उसको अंदर जाने दो, रुको, सोचो, फिर जो मन नहीं, जो अच्छा लगे उसको रखो, जो अच्छा नहीं लगे उसको फेंक दो. It's as simple as that. Okay, can anyone tell me कि ये जो open mind होता है and this openness to learning and किसके दिमाग पे lid होती नहीं है? ऐसे कौन से लोग हैं या फिर who are the people, write on the chat box if you know the answer कि किनके पास दिमाग पे lid ही नहीं होती कोई. Kids. Yes, someone answered kids. तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों के दिमाग पे लिड नहीं होती. दे आर ओपन टू लर्निंग एंड उनको आप कुछ भी बताओ वो मान जाएंगे और फिर अपना दिमाग लगाएंगे कि हमने सुनना है कि नहीं. सो क्या हम अगले कुछ 40 मिनट या 50 मिनट लिए बच्चे बन सकते हैं? आई थिंक इफ यू वांट टू अचीव, you want to learn anything and everything, so I think we can do this. Yes or no? Write yes in the chat box if you're ready to become kids with me for the next 50 minutes. Y for yes. Yes or yes? Lovely. Now we can begin. So I hope कि आपके सर की जो लिड है, माइंड के जो बिलीफ सिस्टम्स है, आपने वो लिड खोल दी है एंड यू ऑल आर रेडी फॉर लर्निंग. काश ऐसे बोल की सर का बिलीफ सिस्टम खाली हो चुका होता है. ऐसे बोल के नहीं होता है, बट ठीक है, विल ट्राई. सो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड राइट. At Eco Group, so we have been having this webinar series, learning webinar series from the past since the time COVID has started, in which we are learning different things every week and many people are giving webinars. So this time it is a bit different. This time I am telling you to unlearn. This time I am telling you कि जो beliefs हमें बचपन से बताए गए हैं उनको question करो in order to learn more. जो बिलीव्स हमें बचपन से समझाए गए हैं उनको क्वेश्चन करो, और अगर उनको क्वेश्चन करके तुम्हें लगता है कि लॉजिकल नहीं है, उनको अपने दिमाग से निकालो, अपने आप पे रिफ्लेक्ट करो एंड रीलर्न द न्यू थिंग्स. बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स, वी आर गवर्न्ड बाय द सोसाइटी, सो इफ वी कीप ऑन डूइंग द थिंग्स वी हैव बीन टॉट, वी विल रीच टू द सेम वे वेयर वी आर, बट नॉट वेयर वी वांट टू गो. सो द entire point, the motive of this discussion is to learn, to unlearn, and then relearn. So I hope by the end of this webinar, I will be able to leave you with a food for thought that you will question everything and apply your mind and be open-minded and be open to learning. The biggest challenge, can anyone tell the biggest challenge? What is the biggest challenge? The biggest challenge is this. We all think you know everything. We all think हमें पता ही है, हमें नहीं जानना. तो जब आपको पता है, then that is the biggest obstacle, that is the biggest lid on your mind. बच्चों को कुछ नहीं पता इसलिए उनको सब कुछ जानना है. But as we grow older, we try to believe that we know everything. So हमें फिर नई चीजें नहीं जाननी और आप नहीं जान पाओगे. So I want कि जो from you know everything, अगर हम ये सोच लें you know nothing, then आप बहुत कुछ सीख पाओगे और पूरी बॉटल भर जाएगी. So in this webinar, we are going to bust the myths that we have and we're going to make it participative and share it with everyone. So you know for a fact that there are 3 things human body can't do. These are the 3 things. You can't keep your eyes open when you sneeze. You can't touch your elbows with your chin. You can't stick out your tongue while breathing out from your nose. Did you know this? जिन ने अपनी जीभ बाहर निकाली है वो अपनी जीभ अंदर डाल लें. So anything which is said with confidence is believed. Anything which is said with confidence might not always be true. This is a myth. Sometimes we say कि अगर कोई confidence से बात कर रहा है उसकी बात सच होगी, but हमेशा सच नहीं होती है.
बी इट आर बिजनेसेस और बी इट पॉलिटिक्स. सपोज अगर मोदी कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपए जाएंगे, चलो आगे चलते हैं, नहीं जाते हैं. सो वी ऑल नो कि इट्स कोरोना टाइम एंड इट इज बिलीव्ड कि हमने पिछले 30 दिन 1.5 मंथ से ज्यादा काम नहीं किया है, काम बंद है, किस किसी ने किया है, किस किसी ने नहीं किया है, बट वी बीन बिट लेजी, वी बीन अ बिट लेथार्जिक. अगर अगर आपके अगर if you don't use your brain for 30 days, it is believed that your learning power goes away. So to so to to start with, I would say that there is a task. Everyone needs to count the number of F's in the next slide and put it in the chat box. Everyone get ready and let's see कि किसके किसके दिमाग चल पड़े हैं, किसके दिमाग सो रहे हैं, and ताकि हम सारे सेम लाइन में आ जाएं. So I'm going to display the next slide and everyone needs, I will give you 10 seconds. Everyone count the number of F's and put it in the next slide. There you go. Count. Everyone in the chat box. Let's see who does the fastest. Fast, 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 fast. Everyone needs to reply. Okay, we have answers 3, 2, 4, 5, 6, 5. और कुछ लोग जिन्होंने देख लिए हैं 6, 6, 7, 7 भी, तो वो सारे उनको कॉपी करके अब लिख रहे हैं. किसी को 12 दिख रहे हैं. हम फिर से देखते हैं, फिर से देखें. लेट्स काउंट. सो फिनिश्ड हैज 1 F, फाइल्स हैव 1 F, ऑफ हैज 1 F 3, another off has 1 F 4, scientific has 1 F 5, and again off has 1 F 6. The right answer is 6. What do we learn? We learn that all things which seem easy aren't always easy. Okay, so we are going to bust some myths and do it. किसी ने ये वाला मिथ सुना है? किसने सुना है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो आगे नहीं जाना है, नुकसान हो जाएगा? सुना है? कभी क्वेश्चन किया है? अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो नुकसान हो जाएगा, तो गाड़ी रोको. मैं कहता हूं कि काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाएगी तो गाड़ी पक्का रोको, क्योंकि अगर गाड़ी चला दोगे तो शायद बिल्ली को नुकसान हो जाएगा बट तुम्हें नुकसान नहीं होगा. So these are certain myths which we haven't questioned. कोई बंदा इसके करके लेट हो जाता है, कुछ हो जाता है. It's all in our thinking. That कभी हमने पॉजिटिव क्यों नहीं सोचा कि आज काली बिल्ली रास्ता काट गई, आज कुछ ग्रेट होगा. एंड बिकॉज आपके दिन में कुछ गंदा होता है, यू रिलेट इट विद कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा था. I don't know if it's right or wrong, but I believe that you should question the things you follow. You should question your belief system and relearn the things. किसी ने ये सुना है कि अब पछताएं होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? ये बहुत पुराना है. दिस इज अ वेरी ओल्ड सेइंग कि अब पछताएं होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. एंड आई बिलीव पुराने जमाने में कि बहुत काम का था, बिकॉज पीपल यूज्ड टू क्राई ओवर द बैड थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू देम एंड नॉट मूव ऑन. बट हमारी जनरेशन ने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, आई बिलीव, कि हम पछताते ही नहीं है. हमारी चिड़िया खेत चुगती रहती है. तो मेरी थिंकिंग है, योर्स माइट डिफर, मेरी थिंकिंग है कि अगर चिड़िया चुग गई है खेत तो पछताना चाहिए, और इतना पछताना चाहिए कि आपकी चिड़िया फिर से कभी खेत आपका चुगे ही ना. यू शुड, अगर आपके साथ आपकी कोई गलती है, देन यू शुड रियलाइज योर मिस्टेक एंड
आपको इतना पछताना चाहिए कि फिर से वो चिड़िया को खेत चुगने का मौका ही ना मिले. You shouldn't take things for granted. Similarly, moving on, किसी ने ये सुना है ट्यूसडे को चिकन नहीं खाना चाहिए? सबने सुना है. बट मैंने इसका रीजन पूछा कि ट्यूसडे को चिकन क्यों नहीं खाना चाहिए, तो मुझे बताया गया कि ट्यूसडे को भगवान का दिन होता है. तो मैंने अगला क्वेश्चन पूछा कि अगर ट्यूसडे को भगवान का दिन होता है तो बाकी सारे दिन किसके होते हैं? अगर ट्यूसडे को भगवान का दिन होता है तो बाकी सारे दिन किसके होते हैं? आई टोटली रिस्पेक्ट व्हाट एवरीवन बिलीव्स, बट अगर नहीं खाना तो फिर बिल्कुल भी नहीं खाना. बट अगर यू डोंट फॉलो, यू शुडंट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली. You should question the belief systems and apply some logic. Similarly, we all knew that, we all heard and we all thought कि कोरोना वायरस तो सिर्फ मार्च तक है, अप्रैल में गर्मियों में कोरोना वायरस चले जाएगा. We all thought कि कोरोना वायरस dies in high temperature. Is it true? It's not. Yesterday only the highest spike in cases, 5,000 cases were registered in one day when the temperatures are soaring high. But we all believed what people said without going for the facts. And the problem is that we circulate this information. And sometimes this information is deadly. There are being hate threats all over. We don't know the logic behind things. Every one of us has heard the story of boys' locker room. I'm not going in detail, but that is something which we need to actually know about. These things are harmly. So my entire purpose is not to talk about this myths or make you believe to them. My purpose is to tell you to apply your mind and use your thinking and move forward. Okay. So किसी ने ये भी सुना है कि छिपकली गिरने से पैसे आते हैं? कि अगर बड़े फनी मिथ्स होते हैं कि अगर छिपकली सर पे गिर जाए तो पैसे आते हैं. तो उन गरीबों का क्या, उन झोपड़ी वालों में जो गरीब रहते हैं उनका क्या, जिनके सर पे 24 घंटे छिपकलियां गिरती रहती हैं और चलती रहती हैं. So it's really high time before we question these beliefs and tell it to others. It is time to pause. Moving on, that now you tell me, I have shared my point of myths in this time. Now you tell me, everyone, what kind of myths have you heard in life? Write it in the chat box कि सबने ऐसे ऐसे myths सुने हैं. मुझे सबसे जानना है, it will be great sharing कि लोगों ने कैसे कैसे myths सुने हैं. So everyone, I've given you examples. I hope you know what I mean. Everyone write down in the chat box the myths they have heard till now in their life. And they've been following it. Everyone, please, waiting. झूठा खाने से प्यार बढ़ता है. No haircut on one specific day. We should not cross a person while walking when the person is resting. Height रुक जाती है. Touching wood will stop all problems. To keep green lives in books. विद्या आती है. They might be true. They might be true. But the point is, we are following them blindly. Blindly. For all those people जिनको बोला था कि लेफ्ट आई फड़कती है तो पैसा आता है, मेरी फड़की जा रही है, फड़की जा रही है, फड़की जा रही है, बट कोरोना के टाइम में कोई पैसा नहीं आ रहा है. जब घर से कोई बाहर जा रहा होता है तो झाड़ू नहीं लगाते. सी. ग्रेट. ओके. हु ऑल थिंक मनी बाइज हैप्पीनेस? किस किस को लगता है मनी बाइज हैप्पीनेस? राइट. यस फॉर यस, नो फॉर नो, एन फॉर नो, yes for yes. Who all think money buys happiness?
Perfect. And money is very necessary, but it is not a fact that money buys happiness. For a fact, the fact is that 1 out of 4 CEOs, 1 out of top 4 CEOs are in depression. The fact is, for example, Vijay Siddhartha, the owner of CCD, committed suicide. He had all the money in this world. So the things, so we spend money we haven't earned on things we don't need to impress people we don't like. So my friends, I want you to take a moment to become more conscious, take a moment to become more aware, and take a moment to be reflective upon life and think upon your decisions. Now the question is that why am I telling you this all right now? The question is that why I'm telling you all of this right now is because Corona time is a blessing in disguise. It has given us a time to reflect upon ourselves, to think, because the problems we are facing are new. And these new problems will not be solved with our old solutions. So it is time we open ourselves to new learning. We say yes to every opportunity. We don't say the word, we know everything. And if we keep doing what we did, we will always reach where we were. So this is why I'm telling you all of this in Corona time कि अब मौका है, कल से जब काम करना है तो नए तरीके अपनाने हैं. हम नहीं कह सकते हमारी इंडस्ट्री तो खत्म हो गई या फिर we are not technically advanced to use all these digital systems. People are changing. People are manufacturing masks, shifting industries, going digital, because those who change and those who adapt will be the leaders of the tomorrow. And how will you change? Only if you unlearn and you're open for new learnings. Moving on, I want to know that, okay, who all want to learn to tie a shoelace? किस किस को shoelace tie करना सीखना है? Type yes in the chat box. Or no, if you know so. Many people are thinking. So many people of you are, I understand, I have a very learned group of audience with graduates, postgraduates, doctorates, and learned people. But I believe that this is a life skill which we've been taught, most of us, in a wrong way. And I would right here try to teach you the right way. And I hope that it is a new learning for you. And before I tell you, many people thought कि यार shoelace मेरे को बांधना सीखना ही नहीं है, because मेरे को आता है, मैं तो बचपन से कर रहा हूँ. बड़े लोगों ने सोचा कि मेरे को तो सीखना ही नहीं है, मेरे को आता है, मैं बचपन से कर रहा हूँ. बट एक बार हाँ बोल के देखो, एंड फिर मत करना. अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो कुछ सीख जाओगे. So I want everyone to bring the shoe they had, and I hope it is visible. And first I'll do it with the old technique. हम कैसे सीखते थे? We always tie the shoelace, first a simple knot, then one knot, then we take it around, and then we tie it the original way of tying a shoe. But there is a problem with this technique. This is a form of a weak knot. I'll show you how. If you pull the shoe like this,
if you pull the shoe like this is a weak form of knot which tends to open more, and it has gone like this. It has not been like this, like a proper flower. It has gone bisectional to this position. Can everyone see? The knot has from this, the knot has gone to this. So the new technique is, I will repeat it also, that you start by doing it the same thing. You start by doing the same thing, then you make a knot, and rather than going from inside, go from outside. Go from outside and then try. This is a stronger form of the knot. And if you do this, still my flowers are there straight. So it looks better, and it is a stronger form of the knot which doesn't untie easily. I'll do it again for everyone. You do the same knot, then you do make one circle, then rather than going from inside, you go from outside. And then you try to do this. Then you try to do this, and then if you pull, my shoe is straight. My knots, my shoelaces are straight. So we unlearned a thing and we relearned a thing which we thought that we always knew. We are graduates and doctorates and age 20, 30, 40, 50, and we are doing this since the beginning. And in life, we never ever have subscribed for a shoelace tying workshop. हमने कभी नहीं किया होता. But अगर इसका मतलब what we learn is कि there is always an scope for improvement. There is always a better technique to do something. You should never say no to learning. Unlearn the old methods and relearn the new methods. So, one more learning which I have is, can anyone tell me the full form of ROI? Can anyone tell me the full form of ROI? What is ROI? Perfect. So everyone, ROI is return on investment. Simple. आपने मेहनत की, आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के शू लेके आए, और आपको एक नई टेक्निक जो लेके आए उनको सीखने को मिली, एंड जो नहीं लेके आए उनको नहीं सीखने को मिली. तो बिकॉज अगर आपने मेरे साथ साथ ट्राई नहीं किया, आपसे मेरे बाद में नहीं होगा. बिकॉज द गेम ओवर हियर इज इम्प्लीमेंटेशन. और अगर आपका ओपन माइंड है तो आपकी लर्निंग के रॉकेट लग जाएंगे, रॉकेट. सो ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. बट इसके साथ एक और मिथ है. एक मिथ हमेशा क्या है जो हमें अभी बदलना पड़ेगा, कि मैं अभी काम क्यों करूं, मुझे तो कोरोना क्लासेस में कोरोना के टाइम में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आ ही नहीं रही. बिकॉज ऑब्वियसली वी नो, एंड स्पेशली my team from Eco Group is attending this webinar. I believe a lot of them have joined, about 50 participants. So I believe कि लोग कह रहे हैं कि अभी रिटर्न तो आ ही नहीं रही, तो काम करने की मोटिवेशन कैसे मिलेगी? जब तक बिजनेस का पर्पस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जब तक रिटर्न नहीं आ रहा तो काम करने की मोटिवेशन कैसे मिलेगी? चाहे जितने मर्जी ऐसे वेबिनार्स कर लो. बट आज हम एक ROI की डेफिनेशन को चेंज करते हैं. आज उस ROI की डेफिनेशन को, आई प्रॉमिस की रिटर्न्स आएंगे.
अगर हम उस डेफिनेशन को ये सोचेंगे कि वो डेफिनेशन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं बट रिटर्न ऑन इंटेंशन है. आई रिपीट, रिटर्न ऑन इंटेंशन. तो अगर आज आपकी पॉजिटिव इंटेंशंस है, you have made a great decision to attend this webinar because you thought that you would learn something, and you are upskilling yourself during this time, and you already have during the past 1 month. चाहे उसकी रिटर्न आए या ना आए, बट वो रिटर्न ऑन इंटेंशन है. आपकी इंटेंशंस पॉजिटिव थी. तो अगर हर चीज में ये सोचेंगे कि आपकी इंटेंशंस पॉजिटिव होनी चाहिए, चाहे इन्वेस्टमेंट पे फाइनेंशियल रिटर्न्स आए ना आए, एक दिन फाइनेंशियल रिटर्न्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. सो न्यू मीनिंग इज रिटर्न ऑन इंटेंशन. I believe that this is also a learning for us. Lastly, I would like to say एक मिथ है. क्या मिथ है? कि फ्री की जो चीज होती है उसमें वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो बेकार होती है. एक मिथ है कि जो फ्री की चीज होती है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो बेकार होती है. बट आई बिलीव कि ये वेबिनार आप सबके लिए फ्री था. सो ऑल दोज हु फाउंड इट वर्थ इट, प्लीज टाइप यस. All those who found this webinar worth it, please type yes. Great. But पता है फैक्ट क्या है? ये तो मिथ है. फैक्ट इज कि फ्री में कुछ नहीं होता. फैक्ट इज कि फ्री में कुछ नहीं होता. You all think that you have gained more from this webinar than I have. Everyone over here thinks that they have gained something from this webinar. Gained what? They have learned to question the logics, question the belief system. They have learned a new way of tying shoelaces. They have learned a new word, return on intention. But I believe that I have gained more than all of you. And how will I gain is through your feedback and is through your appreciation. So my gain from this webinar would be that, as it is my first online webinar, so I hope that I request everyone on the chat box to give me a feedback, give me marks out of 100 or write your comments. So that would be the real learning for me. और फिर मैं अगली बार पैसे भी लूंगा. So anyone, any feedback, any comments, and any personal comments or anything, that would be great, because ये every one of you I consider my big huge family. So I would love it. On the chat box. And yes, we also learned how to use the chat feature. Thank you everyone. So the last myth, the conclusion is in the topic itself. सारा ज्ञान ग्यून तो हो गया. आयुष, ये बता कि how to achieve anything and everything in 39 minutes. ये myth है. If you believe that you can achieve anything and everything in 39 minutes, it is impossible. This is the biggest myth I want to break, that learning is limitless. Learning is endless. Not 40 minutes, not me, not God can teach you everything in life. So whether you are 20, 40, 60 years old, there is always something to learn. The only solution to learning is to open your lid. So what we will do is how to learn anything and everything. How? That every belief, we will not circulate anything in which we don't believe, anything which is not a fact, anything
which is not verified, and we will be open to learning, and we will always say, we will never say that we know everything. So from tomorrow onwards, or today onwards, or the minute this self, we will say yes to learning, and that will make you learn anything and everything in life. So I hope that I've given, you have invested your time, and I have given utmost value, as this is my first webinar, to all of you, and you will continue to listen to me, and this webinar will be inspiring for you, and you have learned something out of it. Do share the knowledge, because शायद जूठा खाने से प्यार बढ़े ना बढ़े, वो मिथ है, बट शायद नॉलेज बांटने से नॉलेज जरूर बढ़ती है. Thank you everyone for your patience, for attending this webinar, and for supporting and motivating me. Thanks a lot. Thank you.